श्रावण मासना पवित्र महीना में हे भगवान हे भोलियानाथ सौ कोई तारी आराधना करता हो केवी रीते करता हो कि पुष्प थी फल थी फूल थी ने नैवेद्य थी तारी आराधना करता हो बाप परंतु तो भगवान भोलियो छे फक्त एक बिलीपत्र थी तू प्रसन्न थई जाय कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियार्धम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम પણ મારી પાસે તો બીલીપત્ર પણ નથી હું ફક્ત મનથી માનસથી તારી પૂજા કરું છું અને એમાં મારે કહેવું હોય તો શું કહેવાય શ્રી શિવ માનસ પૂજા રતને કલ્પિતમાસનમ ભીમજલે સ્નાનં ચ દિવ્યાંબરમ નાનારત્ન વિભૂષિતમ मृगमदा मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्यताम् शोभाणि नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं मृदंगकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतात् समास्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सचरा प्राणा शरीरं द्वयं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा सम्पूर्णा चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो ओम नमः पार्वती पते